Morning class 8, subject maths, chapter 11, chapter name constructions of quadrilateral. Now we are in exercise 11.3, question number 4. Construct a rhombus HTUV in which HT is equal to 4 cm and angle S is equal to 60 degree. स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिर्फ वन साइड और वन एंगल दिया हुआ है, बट आप रोम्बस के कॉन्सेप्ट को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के बाकी चीज़ें खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल. मतलब अगर एस टी दिया है तो एस टी, टी यू, यू वी, एस वी, ये सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल्स होंगे 4 सेंटीमीटर से. और एंगल एस दिया हुआ है तो उसका जो एस टी है तो एंगल टी कितना होगा? 120. बिकॉज एडजेसेंट एंगल का सम रोम्बस में भी पैरेललोग्राम टाइप से 180 होता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस द कंस्ट्रक्शन. सो एस टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो लेट्स सी हियर आई put here scale. Here is a 0 point, so I mark one dot here and at 4 here. So students, then here will be what? I have to join it. This is ST. Point S and this is point T. So students, angle S is given 60 degree. So students, I and from this point I will cut here. Okay students, and now I join this. Again students, this is 60 degree, so another angle will be 120. So I measure here. Then students, okay students, so here S and T, it is 60 degree and this it will be 120 degree. Now students, we have to cut because in rhombus all sides are equal. So students, we measure this. Cut it here, and again with same students I cut it here, and I have to join this line. Now I have to measure this. If it will be 4 centimeter, see here it is 4 centimeter, means all the sides are 4 because I have measured. See here it is, then again from here it is, and it is by default. See here by scale it is 4 centimeter, means the rhombus is completed. So you can name any point S, T. Here you can give the name U, and here you give the name V. In this way your rhombus STUV get completed. So students, you can write down the steps
with your own words. Firstly, you write, draw a line ST, make an angle of 60 degree using the help of compass on point S. So this angle is 60 degree. Again, we know that in rhombus the sum of adjacent angle is 180 degree. Therefore, angle T will be 180 minus 60 degree is equal to 120, and we construct an angle of 120 degree on point T. Here it is. Okay, and same we measure the ST using compass and cut an arc with the line drawn on एंगल. जैसे ये एंगल बना रहा है, इस लाइन से हमने कट किया इतना, इस पे भी कट किया, एंड देन आई डिड व्हाट, ज्वाइन द क्रॉस पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक, I hope you will understood this very well. Now students, we will see other questions in the next video. Okay, thank you. और आप तब तक पूरे कंस्ट्रक्शंस स्टेप्स के साथ लिख करके कंप्लीट कर लो, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके स्टेप्स. You also got marks in your step also. Okay, thank you. Prepare very well.